Yeah, so my name is Iman and I'll be the presenter for this demo session. So let's get started. As you guys know that this demo session is for website development and artificial intelligence. I sent you guys a group for this that you guys joined and then joined this class for the course. Get started. Okay, so as I said, this demo session is for website development and artificial intelligence, and I'll be telling you about this demo session, what you'll be doing in it, and then I'll further let you know about what the course is going to be about and how much is the fees and everything. And there is an exciting discount for you guys after this demo session, only for the people that join the demo session, and anyone that wants to join the course they can get the 50% discount on our course, and I'll be letting you guys know that right after this session. Another thing that if any of you are missing the session, I'll be recording the session, so you guys will have the link for it, and then you can share it with your friends and family and any other interested participant, and even yourself, so that you can refer back to it. Okay. So, the agenda for today's session is basically I have already given my introduction. My name is Iman Abdul Rahim, and I'm the co founder of Lahani Tech Institute. I'm basically, I teach here, and then by profession, I'm a website developer and a video editor. And Lahani Tech Institute, I'm the founder of it, the co founder of Lahani Tech Institute. And as I said, you guys might already know about us, or maybe if you don't, we offer different kind of computer courses for the ages of everyone basically, from kids to adults. Everyone can join any of the computer course they want to join. Like basically, we have courses like website development, we have video editing, we have artificial intelligence, and then we have different kind of courses so that people can join it in very affordable rates. Then we're going to get started with the what is AI, what is website development. I'm going to present you a demo of website development and AI, and then at the end of this session, I'll be sharing the special discount for the demo participants with you. Okay. Any questions up till yet? Okay. So if there isn't any question up till yet, let's just move on. Okay. So, yeah, Razia, you just joined. I was just giving a little introduction about myself, and now we're proceeding towards the actual demo of this, okay? All right. So, yeah, as I said, I am a co founder, and my name is Iman Abdul Rahim, and then this is Abdul Rahim Lakhani, the founder of Lakhani Tech Institute, that you can see right over here on my screen. Basically, right after the courses, you'll be receiving certificates. Now, if you are getting an online class from us after this session, if you're joining for the online course of AI and website development, then you will get the certificate, in hand. Physically, you'll be provided a certificate. But if you are coming online, if you're taking the course online, then you'll be provided with a online copy, the soft copy of the certificate to your WhatsApp numbers and your emails, so that you can print it out later. All right. So for the physical people, the people attending the in-person course, आप लोगों के पास आप लोगों को physically certificate hand over किया जाएगा. And then अगर आप लोग online join कर रहे हो course, तो आप लोगों के लिए online certificates, the e-certificates will be provided to you guys. Okay. Oh, also, these are the students that recently received our certificates. Although we have taught like above 100 to 200 students up to yet at the institute, these are some of the students, the ones that I'm showcasing right over here, that are receiving the certificate from us. Now there are different categories. They're receiving as in graphic designing. They're receiving in website development, website designing, video editing, and then there is CIT course where you can learn basic to advanced computer. There is artificial intelligence. So basically, they're receiving all those certificates for that. Another exciting thing about the courses is that whatever course you attend, afterwards you'll be getting to join our internship after the course. Okay. So basically, right after the course, you will be provided with internship. For the people who wants to take internships, the students that will be performing the best in the courses, we will be offering them the internship. We'll give an interview, and then we will select you for the internship. Now there is a 1 month internship that is paid actually.
a paid internship where you guys will be, performing the skills that you've learned from the course, and we'll be providing you different tasks like SEO. There's digital marketing, there's social media marketing, WordPress development that you're about to learn right now, artificial intelligence. So we have different kinds of internships available, and these are a few people that you can see right on the screen that are, doing the internships with us. And the exciting thing about this is that the 1 month internship will be paid or unpaid according to the participant. But if the participant gets selected, and he or she is the best candidate, the best intern, we will offer them a job. And there has been we have offered jobs to a lot of our interns here, and जब उनको internship के बाद job provide होती है, so the starting salary is above 15,000. So and then they permanently work for us at our institute, at our office. They'll also receive an internship letter and an experience letter from our institute and from our company as well. So our company, Rahani Solution, that's a registered company. So they'll be receiving the certificates and the letter of experience from our company for right after the internship. All right, so let's just proceed. Yeah, Nazia, you just joined the session, so I was just letting the people know about what's in the demo session and my introduction and everything. Okay, so let's proceed towards WordPress development now. If you guys don't have any idea, I'll let you guys know. Basically, websites are important for the digital presence of a person, right? जब आपको like for example मैं मेरा एक food brand है, for example, okay, I sell fast food like pizzas and burgers वगैरह मैं sell करती हूँ. So uh, now people will contact me over WhatsApp. WhatsApp पे मेरे पास आएंगे. They will order the food from me. I'll provide them. But mostly in today's world, what people would like is that they would want a website ताकि वो just Google पे जाएं, आपके brand का नाम लिखे. For example, मेरे brand का नाम I put Foodies Mania. Okay, and अब Foodies Mania का WhatsApp number तो सबको नहीं पता होगा ना. They don't know what Foodies Mania is. Like a friend or family recommended it to you. But how will you get to know what basically Foodies Mania is? I will go on Google and you'll search about it. But what if आपकी कोई website ही नहीं है? The person will just search up Foodies Mania, they wouldn't find you, or the person would search fast food and they wouldn't find you there. So then you're losing a customer. You're basically not getting more sales on it. This I'm talking about e-commerce. E-commerce brand की बात कर रही हूँ. जब किसी को they will go on Google क्योंकि normally हमें कोई भी चीज़ search करनी होती है, we just go on Google, right? And then we search about it. But what if you're not on Google? That's why basically we need a website. Website is for digital presence. जैसे आप लोगों के पास ID card होता है when you go to schools or your offices and stuff, तो वो लोग आपको एक ID card देते हैं जिसमें आपकी identity बताई हुई होती है. So to you know alert people about your identity कि भाई I am present in the market, you need to have a website. And in today's world, everyone has a website. इवन तो आप अपने एक सीवी या रेज्यूमे क्रिएट कर रहे हो ना, उससे भी बेटर ये हो रहा है कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर दो ताकि गूगल पे लोग जाएं and then they search about you, they read about you, and then if they want to offer you a job, they can offer you a job. So when you'll be taking the course from us, we will be helping you कि आपको वेबसाइट किस बारे में बनानी है. लाइक फॉर एग्जांपल आप में से कोई ब्रेसलेट्स बनाने में अच्छा हो क्योंकि यू गाइस नो कि a lot of people are हैंडीक्राफ्ट वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं या होममेड फूड वगैरह में होता है. तो फॉर एग्जांपल कोई हैंडीक्राफ्ट्स बनाता है, ब्रेसलेट सेल करता है, वो उनकी इंस्टाग्राम की शॉप है. But they want to they want people to go on their website and order from there. You can do that. So I will help you guys decide कि आप लोगों को किस चीज़ की वेबसाइट बनानी चाहिए, मतलब किस चीज़ में आप लोग अर्निंग कर सकते हो. I'll help you on that. हम उसके ऊपर वेबसाइट बनाएंगे and then we will launch it on Google. So you will basically have a website for you कि फिर आप लोगों को भेज सकते हो कि भाई hey you can go to my website and search for my product. Like how cool would that be? And people would have a website for you to they can go there, they can contact you, they can order stuff from you, and then your sales will get double. All right, so I will be helping you with figuring out what niche website you want to or you should create. All right, and now I'm going to show you the kind of website or an example of how you can create a normal website. Okay, so I'm just going to share my entire screen. Okay, can you guys see my screen? Is my screen visible? Okay, I hope my screen is visible. Uh,
All right. Okay, so I'm just going to create a quick WordPress website right now in front of you guys. Now, basically, website हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, वन जो होता है कोडिंग. अब वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी होगी, बट मतलब कोडिंग पूरी सीखनी पड़ेगी, देन you'll be able to create your website. Now, not everyone, wants to learn coding, क्योंकि कोडिंग के अंदर, you might not enjoy coding, and then you might lose your dedication towards creating a website. So this is the first option. Agar coding aapko aati hai ya you want to learn, then you can create the website according to your coding. But if you want to create a website very quickly in a very easy manner, like you want for it to be not that complicated but easily create karna chah rahe ho, so then you can use a platform like Wix, WordPress, or any platform जो कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट क्रिएट करने का एक ऑप्शन दे रहा है. तो ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट जब हमें क्रिएट करनी होती है, सो देयर आर डिफरेंट लाइक स्टफ लाइक विक्स है और डिफरेंट आर्टिफिशियल एआई प्लेटफॉर्म्स बन गए जहाँ पर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. बट आई पर्सनली रिकमेंड वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस इज अ मोर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म. वहाँ पे अगर आप वेबसाइट बना लोगे तो लेटर यू विल हैव द एबिलिटी टू आपकी वेबसाइट सिक्योर होगी, कोई मतलब डिलीट नहीं हो जाएगी अचानक से. यू वोंट लूज योर प्रेजेंस, and your website is safe and secure, and people's information will be safe, and there will be free of viruses. So WordPress is a more reliable platform according to me. So I'm going to be showing you how you can create a simple one page on WordPress, and then afterwards जो further जो चीज़ें होंगी you guys will be learning in the whole course. All right. So uh, okay. Hello, Anjali. You just joined. Basically, we are just going over I'm just showing the people how they can create a WordPress website. Okay, WordPress website जो drag and drop के through आप website create कर सकते हो. All right. So if you have any questions in the middle of the class, you can just let me know, and I will help you accordingly. Okay. So basically, I'm just going to install WordPress real quick. देन हम वर्डप्रेस के अंदर की चीज़ें पे डिस्कस करेंगे. अब ये सारी वेबसाइट बनाने के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होगे. आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सो दैट यू गाइस कैन सी ऑल ऑफ दिस. या ओके. तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मतलब इन सब पे वेबसाइट क्रिएट हो सकती है. यहाँ पर भी हो सकती है, ये नीचे CMS में ड्रूपल पे हो सकती है, जूमला पे हो सकती है. देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे सेड विक्स वगैरह, इन सब पे हो सकती है. मजेंटो है, शॉपिफाई है. So different places where you can create your own website. So we are basically going to use this WordPress right over here. Okay, हम इस WordPress पे जाके अपनी website create करेंगे. So I've just installed WordPress right now. WordPress is a website जहाँ पर आप जाकर अपने website create कर सकते हो drag and drop तरीके से. So you require no coding skills. Okay. So now that I have created the website, there are two links for me. नंबर वन, यहाँ से मेरी वेबसाइट खोल के मैं अपनी वेबसाइट को व्यू कर सकती हूँ कि मेरी वेबसाइट किस तरह की लग रही है. तो अभी इसके ऊपर डमी कंटेंट मुझे वर्डप्रेस डाल के देगा. बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर डमी कंटेंट है, एंड आई विल हैव टू रिप्लेस दैट कंटेंट विद न्यू कंटेंट. ओके. तो ये जस्ट उसने मुझे बना बनाया कुछ कंटेंट दिया हुआ है, एंड नाउ आई विल बी रिप्लेसिंग दिस कंटेंट टू क्रिएट माय ओन वेबसाइट. एंड देन there's another link for this WP admin. So it will just sign me into my website. Okay, as you saw मैंने password और वो सब बनाना create करना सिखाया था, and once अब मैं इसके अंदर sign in हो जाऊंगी, then I'll be able to create my own website, my own page for the website. Okay, so I'll just put in the credentials for this. All right, and then it will sign me in. Okay, so when you're signed into WordPress, now what you have to do basically, अब हम अपनी website को खुद like create करना start करें, because our website looks like this right now. But my website is about ice cream, so I want to put up the images and the stuff about ice cream over here. So what we're going to do, यहाँ पर एक हमारे पास different pages हैं in pages option के अंदर. I'll just go to the pages option. Okay. And now we will go ahead and customize our homepage according to what we want for it to be. So now what we will do, let's just add a new page from here. अच्छा, इसके अंदर एक हमारे पास एक बिल्डर भी प्रेजेंट है. व्हाट वी कैन डू कि हम उस बिल्डर के थ्रू भी अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं. बेसिकली जब हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, सो वी विल बी क्रिएटिंग इट विद एलिमेंटोर. इट्स बेसिकली अ प्लगइन जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके अंदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हो.
Okay, so I'm just going to install a plugin named Elementor right over here. Okay, just installing Elementor. इसका ये free version है, but when you will be in the course with me, I'll provide you with the pro version of Elementor, जिसके अंदर और ज़्यादा option होता है. I'll just activate this. Now, if you're wondering कि मैं plugins क्यों install कर रही हूँ, basically plugins install करने से फ़ायदा ये होगा कि through the plugin, like वो आपके लिए helpful है. You'll be able to use those plugins to create your website. Okay, so it's a better option अगर आप लोगों को अपनी website create करनी है, so you'll need plugins to do that. Alright, so अब मेरे पास Elementor install हो गया है, and now what I have to do, मुझे अपने pages को edit करना है. Okay, ये मेरी website है, so there will be an option, there should be an option above there to edit the page. So now what I will do, I will go into the pages option, and यहाँ पर मेरे पास sample page बना हुआ है. Let's just click on edit. Okay, over here, and once edit पे click करोगे, it will take you towards the WordPress editor, Elementor editor. There we go. यहाँ पर edit with Elementor लिखा हुआ है, you can just click on that. एंड देन जो है, अच्छा, अब एलिमेंटोर का फ़ायदा ये है कि उसके थ्रू आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें क्रिएट कर सकते हो. बट अगर मैं एलिमेंटोर इंस्टॉल नहीं करती तो आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग वगैरह रिक्वायर्ड होती चीज़ें क्रिएट करने के लिए. बट राइट नाउ यू डोंट रिक्वायर एनी ऑफ दैट. ओके, देयर वी आर. यहाँ पर आई हैव दिस पेज. ओके, अब मेरा यहाँ पर जो है सैम्पल पेज मेरे पास आ गया. सो नाउ द थिंग्स दैट आई डोंट नीड, जस्ट उसको क्लिक करके आई विल जस्ट क्रॉस इट आउट. ओके, ये सैम्पल पेज लिखा हुआ है. देयर वी गो. नाउ इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर मी टू पुट इनसाइड ओवर हियर एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग. तो लेट्स जस्ट ट्राई टू क्रिएट सिंपल स्टफ. जैसे हेडिंग है, मैंने हेडिंग को यहाँ ड्रैग किया. ओके, एंड अब इसके अंदर आई विल, लेट्स से मेरा ब्रांड आइसक्रीम के बारे में, सो आइसक्रीम स्टोर. ओके, अब इसको मैंने मिडल अलाइन कर दिया. द नॉर्मल स्टफ. यहाँ H1 की हेडिंग है. स्टाइल के अंदर गए, यू वांट टू चेंज द कलर, so I'll just let's just change the color to black right now. Here, here something purplish kind from here. Okay, then you can change the typography मतलब writing change करनी है तो writing के यहाँ पे option है. I want to keep my writing to be थोड़ा सा styled, kind of like, for example, I like this writing, so I'll just keep this one. Okay, text shadow है, stroke है, then all of those fun stuff. Now again ये ऊपर वाला option में जाकर I'll go ahead and create I want to add an image. So let's just add an image over here. I'll just drag this. Now here comes the part of AI. अब हम AI को use करते हुए, AI means artificial intelligence. Artificial intelligence को use करते हुए I'm going to create the website. तो अब इसके अंदर artificial intelligence किस तरह use होगी? Now here you can see this picture. I want to add a picture. तो इसके लिए now what I will do कि मैं जो है एक artificial intelligence के लिए तो हम chat GPT वगैरह use कर सकते हैं, as you guys already know कि artificial intelligence AI जो है बेसिकली वो आपकी आपके वर्क के अंदर जो है वो ऑटोमेटेड मतलब कंप्यूटराइज चीज़ है जो कि कंप्यूटर आपकी हेल्प कर देता है चीज़ों में. फॉर एग्जांपल आजकल चैट जीपीटी जो है वो बहुत फेमस चल रहा है. चैट जीपीटी क्या कर रहा है कि वट एवर क्वेश्चन यू आस्क चैट जीपीटी, लेट्स से कि आई एम क्रिएटिंग एन आइसक्रीम website, help me decide a name for my brand. Okay, I just told him this. Now what he will do, ये मुझे कुछ जो है names provide करे, जैसे Frosty Swirl Delights, Arctic Bliss Creamery, Chiltern, ये Scoop is Couple Heaven, now Haven. Now I want this to be more of Pakistani style, so I need Pakistani style names for this store. Provide me 10 names. Okay, अभी मुझे 10 नाम provide करेगा, इसके 10 names provide करेगा. See, there we go. Karachi Scoops, Peshawari Chills, Desi Cream Delights. Now it just gave me a lot of Karachi type names, Pakistan type names. So for example, I want this. Okay, give me a few let's say USA kind names. Okay, देयर वी गो. अभी मुझे यूएसए की काइंड करेगा. ओके, सो बेसिकली चैट जीपीटी जो है वो चैट बेस्ड एआई है जिसके थ्रू आप उसको जो भी चैट पे लिखोगे ना वो आपको चैट प्रोवाइड करके मैं लाइक लिख कर आपकी हेल्प करेगा. ओके,
So let's say कि I choose this let's say freedom freeze अच्छा है या all American cones अच्छा है okay Uncle Sam's Sundays अच्छा है Sweetline Premier so I'll just go with Liberty Swirls something okay and then मैंने इसको आइसक्रीम स्टोर के अंदर नीचे ये वाला नेम पेस्ट कर दिया कि ये मेरा ब्रांड का नाम है ओके नाउ फॉर द इमेज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इमेज में कैसे हेल्प करेगा अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आइसक्रीम लिखती हूँ सही एंड देन आई गो टू इमेजेस अब इसमें क्या है कि ये अब या वेबसाइट में एक मसला ये होता है कि जब आप इमेजेस गूगल से लेते हो ना किसी की तो ये तो किसी और की इमेजेस हैं व्हेन यू विल पिक दीज इमेजेस एंड पोस्ट इट ऑन योर वेबसाइट तो गूगल आपको कॉपीराइट का इशू दे सकता है कि यू हैव कॉपीड समवन एल्सेस पिक्चर्स सही है सो यू नीड टू हैव योर ओन पिक्चर्स यू हैव टू क्रिएट योर ओन इमेजेस कि अपनी खुद की इमेजेस जो है आप जनरेट करके लगाओ ना ऑब्वियसली यू वुडंट गो फॉर अ फोटोग्राफी कि आइसक्रीम ली फिर उसकी फोटोग्राफी की फिर उसको वेबसाइट पे लगाया सो व्हाट यू विल डू यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई एक एआई है अडोप का firefly.adobe.com हियर इस पर क्या होगा कि वट एवर यू टाइप लाइक आप उसको लिख के दोगे कि भाई क्रिएट मी एन आइसक्रीम कोन दैट इज ट्रैवलिंग इन स्पेस तो वो आपको वो वाली पिक्चर जो है खुद जनरेट करके दे देगा तो बेसिकली इस चीज़ का फ़ायदा ये है एआई का कि वट एवर यू आस्क हिम टू डू इट विल डू ओके नाउ सी there text to image whatever text you will type it will convert it into image there's generative fill see what generative fill is doing. You will type whatever you want, and then it will, change your clothes accordingly. Yep, here, for example, you took a picture and then you color the background and you ask it to change the background to a beach house. It will do that. There are text effects. Text effects इस टाइप के कि वो आपको डिफरेंट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को चेंज कर देगा ओके so let's try text effects I'll just click on generate okay and let's see what this text effects option can do राइट नाउ आई एंटर द टेक्स्ट मैंने जो अपने ब्रांड का नाम बनाया था वो था लिबर्टी स्वर्ल्स ओके अब मुझे इसको लिखवाना किस तरह है डिस्क्राइब द टेक्स्ट इफेक्ट्स यू वांट टू जनरेट तो मैंने लिखा कि आई वांट आइसक्रीम dripping from letters yeah let's just ice cream dripping from letters something like this yeah ice cream dripping लिख देता yeah ice cream melting भी लिख सकता as simple as you can type then click on generate once generate पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है ये लिबर्टी स्वर्ल्स जो मैंने लिखा है ये उसको मुझे चेंज करके उस आइसक्रीम मेल्टिंग इफेक्ट के अंदर दे देगा ओके सी इससे मुझे इस तरह क्रिएट करी दिया एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड मी लाइक 4 ऑप्शंस कि मुझे किस काइंड के चाहिए आई कैन ऑल्सो चूज दिस वन ये भी चूज कर सकता okay so you can choose the kind of text effect you wanted तो मुझे for example first वाला ज़्यादा better लग रहा है whoever has a question I'll take your questions at the end of the class okay so I'll take your questions at the end of the class now right now ये सब मुझे step का first effect let's say I want to take इसे देखो उसी तरह का create किया है जैसे मैंने इसको ask किया था I asked it to have the letters drip ice cream so the ice cream is dripping from the letters now what I will do इसको मैं अपने पास डाउनलोड करना चाह रही हूँ सो लेट्स जस्ट डाउनलोड दिस ओके there we go it is downloading the image ये हमारे पास images के आ गए so let's just upload this image to our website मैंने अभी यहाँ पर एक image का option ऐड किया था I'll click on that choose image and now I will just upload the image जो अभी मैंने download किया right over here let me just upload the image there we go ये यहाँ पर upload हो जाएगी so I can post it onto my website okay because I wanted a banner for my website so now I have a banner for my website there we go इसको select करते हैं and यहाँ पर हमारी website का ये banner आ जाएगा so now ये जो Liberty Souls मैंने पहले लिखा था मैं इसको मिटा देती हूँ and we'll just use the image okay there Liberty Souls लिखा हुआ आ गया अब इसका size वगैरह जो adjust करना है हम style में जाके इसकी width वगैरह को यहाँ से increase कर सकते हैं okay so however big you want it to be वो यहाँ पर आ जाएगा there we go now we want to post some ice cream pictures so अब Adobe Firefly के अंदर जैसे I told you before कि यहाँ पर और भी तरह के options है like other than text effects यहाँ पर generative fill है यहाँ पर there's text to image तो हम different kind of वो वाली चीज़ों को भी explore कर सकते हैं let's see
Okay, Adobe Firefly के अंदर ही ये सारे options हैं. So let's try something else. अब यहाँ पर हमारे पास, let me just see if it's recording. Yeah. Okay. अब हमारे पास यहाँ पर और भी options हैं, like where we can go to text to image. Okay, I'll just click on generate over here, and now we will ask it to generate some, ice cream images for us. So let's say I want it to be a fun image. So ice cream on top of a planet in space. Okay. अब इसको आप जो भी लिखने का बोलोगे, मतलब जो भी बनाने का बोलोगे, वो create कर देगा. So I just chose this idea of making the ice cream on top of a planet in space. Okay, something like that. अब इसको generate करता. Now, whatever you will like, write, let's say a car swimming in the lake, it will also create that. So basically, AI will be generating computerized image. तो ये कोई human create नहीं कर रहा है ये पीछे images, ये जो है computer खुद images आपको create करके provide कर रहा है. So it will take a little time. There we go. ये देखो जो मैंने इसको आइसक्रीम ऑन टॉप ऑफ अ प्लैनेट इन स्पेस क्रिएट करने का बोला था. सो इट्स क्रिएटेड डिफरेंट काइंड्स. अब मुझे आर्ट टाइप का चाहिए, फोटो चाहिए, नीचे और भी टाइप के हैं. गेस के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है. सो वी कैन जस्ट गो ओवर ऑल ऑफ दोज स्टफ व्हेन वी आर इन द एक्चुअल कोर्स. बट अभी we have finally created this. So I want to go, for example, for this one. So I'll just click on download. Okay. एंड वन फिर अच्छा ये अभी फायरफ्लाई जो भी है until we buy it वो हमें watermarked images provide करेगा. Okay, so we will have to use the watermarked images. I don't think that's anything wrong with it. You can crop it later or something. या फिर you'll have to buy it. So let's just अच्छा यहाँ नीचे प्लस का ऑप्शन है. I want 4 images to be showcased here. तो मैंने 4 वाला जो है ये ऑप्शन पे क्लिक कर दिया. Now I can, or maybe let's say okay, I want two columns. Okay, मैंने two column पे क्लिक किया. First वाले के अंदर I want to add an image. So let's say I took the image option, इसको यहाँ अंदर ड्रैग कर दिया और दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ साइड पे मैं चाह रही हूँ कि एक जो है बटन आ जाए या हेडिंग आ जाए, टेक्स्ट आ जाए. So I'll just drop the text over here. It's as simple as that. Just drag and drop काम है. और नीचे मैं एक बटन डालना चाह रही हूँ. So I'll just drag the button to be here. Okay. बटन के ऊपर I want कि यहाँ पर लिखा हुआ shop now. So I'll just type shop now. Okay. एंड बटन को जब मैं मतलब उस पर माउस रखूँ, सो आई वांट एन एनिमेशन. तो स्टाइल के अंदर जाकर वी कैन डिसाइड ऑन द एनिमेशंस वी वांट. So let's just choose an animation kind from here. Wait, let me see. From the style, यहाँ पर हमारे पास different animations आनी चाहिए, which is hover के अंदर when you go, तो hover animation लिखा हुआ है. So let's say I want it to pop. So when you put your mouse on it, it gives a pop animation. Or if you want it to grow rotate, so it will do this. Okay, let's say I want this. I want to change the color also. कि जब मैं माउस रखने जाऊँ तो उसका कलर चेंज हो. So right now I want it to be black, and जब मैं उस पर माउस रखूँ तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ डिफरेंट कलर का हो जाए. लाइक वो हो जाए कुछ पिंक काइंड ऑफ. ओके, सी नाउ दिस विल हैपन. A gradient background for us. Okay, text के अंदर I want to write के the okay, now I'll go to ChatGPT and ask him write me a 5-line short paragraph about my ice cream store जिसका नेम मैंने लिखा है Liberty Liberty Swirls. Okay, I'll just ask him this. Enter किया and there we go. So मुझे ये जो है यहाँ पर write करके ये चीज़ दे दिया. Okay, so I'll just copy this and I will just put it here in this text. There we go. Okay, जैसे यहाँ पर लिख दिया. अब मुझे इसको कस्टमाइज करना है, बड़ा करना है, जो भी करना है, you can do that. And here in the image I want to upload the image that I just created, जो मैंने अभी Firefly के साथ, Adobe Firefly के साथ create किया. So let me just put that here. And there we go. ये image आ गई, इसको select किया और अभी इमेज यहाँ पे शोकेस हो गई. ओके, सो दिस इज व्हाट आवर वेबसाइट लुक्स अप टिल हियर. नाउ अदर देन दैट अब इसके अंदर वीडियो का ऑप्शन है, डिवाइडर है, देयर इज गूगल मैप्स, देयर आर सो मेनी मोर लाइक प्राइस लिस्ट है, मीडिया कैरोसेल, काउंटडाउन है, पोस्ट है, पोर्टफोलियो, सो मेनी मोर ऑप्शंस. ये सारे प्रो वर्जन है. द प्रो प्लगइन आई विल प्रोवाइड यू. स्लाइडर है, इमेज बॉक्स, आइकॉन गैलरी, और ये सब सारे फ्री हैं. प्रोग्रेस बार, टेस्टिमोनियल्स, देयर इज टॉगल बार,
Okay, कोडिंग के लिए HTML वगैरह के लिए SoundCloud, social icons like you can follow me here. Let's say मैं social icons को यहाँ डाल देती हूँ नीचे, या यहाँ नीचे डाल देती हूँ. Okay, so let's say कि यहाँ पे social medias मैंने डाल दिया, and I can not here actually, I wanted to be somewhere else. तो ये सोशल मीडिया आइकन्स को उठाकर हम कहीं और भी, लेट्स से शॉप नाउ के बटन के ऊपर मैंने डाल दिया. ओके, एंड देन यू कैन ऐड मोर अदर देन दीज. ठीक है. And then there are a lot more options. Rating has site के लिए different options are. Okay, so there's a lot that you can do. Now let me show you some example sites that I have already created with WordPress. But before that, let's just update this page. मैंने इसको update किया. Okay, and now let's open this page on our website. So मैंने ये website जो है, ये हमारी लिंक है. इस वेबसाइट के अंदर हमने सैम्पल पेज के अंदर क्रिएट किया. सो व्हेन आई क्लिक ऑन सैम्पल पेज, इट विल टेक अस टू द वेबसाइट दैट वी जस्ट क्रिएटेड. ये वाली लिंक जो है मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि यू गाइस कैन सी दैट इन रियल टाइम कि ये वेबसाइट किस तरह से क्रिएट हुई है. ओके, सो यू कैन ऑल्सो व्यू दैट लिंक. एंड अदर देन दैट, अगर मेरी वेबसाइट यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखो, तो ये हमने AI के यूज़ करके एक वेबसाइट को वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट किया है. ओके, सी, अब इसको हम और बेटर बना सकते हैं. वर्डप्रेस के अंदर किस किस काइंड्स की वेबसाइट क्रिएट होती हैं, लेट मी शो यू. I'm just going to show you a few websites that I have already created before with WordPress, and those are pretty cool websites. So you will be liking, those kind of websites. So this is the first one. इसके अंदर अच्छी खासी animations वगैरह मैंने use किए हुए हैं. It's for a Dubai company that I created. Okay, so if you see these buttons, and when you go down, यहाँ पर ये इस टाइप के options हैं. Okay, and this all is designed into WordPress. अभी तो हमने बहुत छोटी सी चीज़ सीखी है, but when you're taking the course, तो इसके अंदर अच्छी खासी चीज़ें you will be learning. All of these, ये जो stuff create हुआ है, ये सब WordPress में उसी Elementor के थ्रू हुआ है जिसके थ्रू अभी हमने आइसक्रीम वाली वेबसाइट बनाई है. Okay, see how cool does the website look. Okay, so this all is pretty easy to create into WordPress. ये website है, then there is this another website for a client. Okay, there we go. It's a pretty cool website. नीचे जाओगे तो animations भी हैं इसके अंदर से. So it's all possible easily with the Elementor option, और easily जो है हम इस चीज़ को create कर सकते हैं. So website development is pretty easy when it comes to Elementor, जो कि हम course के अंदर which is starting soon, we will be helping you create. This is a food website. You can see these options. Area select करने का option है. Let's select, and now see, these all are moving. Animation type की भी website create हो सकते हैं. Okay, there we go. And there are a lot more websites like these if you see. Okay, then there's this clothing store website. इसको अगर मैं क्रॉस करूँ, then see, ये clothing store की website create हुई है. So there's a lot that you can do with website development. अब इसके अंदर, ये वाली website के अंदर पीछे video play हो रही है. If you see, यहाँ logo आ रहा है, और ये पीछे आपके पास एक cool video play हो रही है जो कि इस तरह से जा रही है. So you can also do that. See, ये यहाँ पे इसने चीज़ें यहाँ पे इस तरह क्रिएट कराई हुई है. इट्स ऑल्सो ए वुमेन्स बुटीक वेबसाइट दैट इज़ इन दुबई. ओके, सो AI का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए, एंड वर्डप्रेस का यूज़ करते हुए, देयर इज़ अ लॉट मोर वेबसाइट्स दैट यू कैन क्रिएट प्रीटी ईजिली. ओके, नाउ okay, so let's just end the class right over here. Basically, what we've learned is about WordPress development, website development, कि website हम किस तरह create करते हैं, and then we included two websites for artificial intelligence. Okay, अब artificial intelligence का use करते हुए we can do a lot more. अभी तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों को बताई है. Okay, we will be using a lot more artificial intelligence in the actual course. So let me show you this screen. If you see, अभी हमारा जो ये कोर्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स बेसिकली अ 10 days course. Alright, so it's basically a 10 days course, जो कि 6,000 का है, but we're providing it to the people that took the demo session. We're providing it for 50% discount, which is 3,000. Okay, so अभी as you saw कि हमने एक website create की थी इस demo session के अंदर, and we also use artificial intelligence to create the website much better way. The last date for this discount is for 6 p.m. tomorrow, and then we will be back onto our actual course price. Okay,
So whoever wants to register, I have provided you the WhatsApp number. You're also in the WhatsApp group. So अगर ये if you want to take the course, which is starting next week Friday, if you want to take the course, so you have to register with me on the WhatsApp. ओके देयर वी गो. इसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं. एंड द कोर्स फॉर द 10 days इज ऑफ 3,000. ओके, सो इफ एनीबडी ऑफ यू वांट्स टू रजिस्टर, यहाँ पर मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ है. आई ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन द chat box so that you guys can go ahead and register for that. So if there is any question from your guys' side, I'll just put in the number right over here. तो इस number पर आके you can contact me. I'll just stop sharing the screen now. WhatsApp number यहाँ मैंने इसके अंदर provide किया हुआ है. So if any of you have any further questions, you can just contact me over here. All right. I'll see you guys in the course if anybody of you registers. All right. Allah Hafiz.